चलो आजे बनावीशुं पनीर फ्रेंकी। तो बाउलनी अंदर तेल एड करी देशुं, त्यारबाद चणानो लोट एड करी देवानो छे, थोड़ुं एवुं दહીં नाखीशुं, त्यारबाद आपणे અહીં आदू लसणनी पेस्ट एड करी देवानी छे, લીંબુનો रस नाखीशुं, त्यारबाद थोड़ो एवो हळदर पाउडर एड करी देवानो छे, काश्मीरी मरचुं नाखीशुं, त्यारबाद स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करी देवानुं छे, मैगी मसाला एड करी अने त्यारबाद आपणे અહીં पनीर नाखीशुं। तो पनीरने आपणे અહીં मसाला साथे कोड करी लेवानुं छे। तो एक बाउल एक मेंदानो लोट लई लेवानो छे, त्यारबाद स्वाद प्रमाणे मीठुं नाखीशुं, मोण माटे અહીં तेल एड करी देवानुं छे। हवे थोड़ुं थोड़ुं पाणी एड करी अने फ्रेंकी माटेनो लोट बांधी लेवानो छे। त्यारबाद पेननी अंदर बटर गरम करवा माटे मूकवानुं छे अने कोड करेला पनीरने एड करीशुं। तो पनीरने आपणे અહીં रोस्ट करी लेवानुं छे। पनीर रोस्ट थई जाय त्यारबाद અહીં डુંગળી नाखीशुं, કેપ્સિકમ मरचा एड करी देवाना छे, त्यारबाद आपणे અહીં ટામેટા नाखीशुं। तो फ्रेंकी माटेना स्टफिंगने आपणे અહીં 1 मिनिट माटे कूक थवा देवानुं छे। त्यारबाद राउंड शेपनी अंदर आपणे અહીં फ्रेंकी माटेनो बेઝ रेडी करी लेवानो छे। तो बेઝ आपणो અહીં रेडी थई गयो छे। त्यारबाद पेननी अंदर आपणे आ रीते बेઝની ઉપર બટર લગાડી અને બંને બાજુએ શેકી લેવાનો છે। तो फ्रेंकी माटेनो बेઝ અહીં આપણે રેડી છે। ત્યારબાદ ટોમેટો કેચઅપ અને શેઝવાન ચટણી એડ કરી અને આપણે આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું। તો રેડી કરેલા સ્ટફિંગને આપણે અહીં વચ્ચે સેટ કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ ડુંગળી નાખીશું, ચાટ મસાલો અહીં સ્પ્રિંકલ કરી દેવાનો છે, ત્યારબાદ ચીઝ એડ કરીશું। જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।